Hi guys, welcome to another podcast. Today we're having Dr. Hammad Cheema in the studio. Sir, thank you so much for your time. Sir, right now आप serve कर रहे हैं as principal and dean at Science in NUST. You did your postdoctorate from King Abdullah University of Sciences and Technology. Also, you served in Microsoft and Motorola. And sir, thank you so much. I'll start my question. The first question is, what is the vision of science? What's the backstory? And what are the insights you can give about this amazing department so far? Okay, thank you very much for having me, A pleasure, Faisal. sir. SINES stands for School of Interdisciplinary Engineering and Sciences, and there's a very interesting, background behind establishing SINES at NUST. So अगर हम कुछ साल जो latest trends हैं उनको देखें internationally, so three things have come up. The first thing is कि जो research है over the Mm-hmm. period of time, it has become very interdisciplinary. इनफैक्ट अगर हम एक रिसर्च पेपर जो कि नेचर में पब्लिश हुआ था 2015 में एंड दैट बेसिकली एनालाइज्ड अबाउट 35 million Okay. papers published in the last 2 decades, और दैट शोड कि जो इंटरडिसिप्लिनरिटी है रिसर्च में Mm-hmm. दैट हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड. सो Okay. बाय दैट आई मीन कि जो उसमें डिफरेंट ऑथर्स हैं they come from different backgrounds. Mm-hmm. So that is a key trend which has taken up in the last 2 decades. The second thing which has happened is कि जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास मल्टीपल डोमेन्स की स्किल सेट हो, so that they can solve real world problems, because majority of the time to solve real world problems you need this knowledge from different disciplines. और ये एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ Mm-hmm. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर based on traditional silos of vertically integrated disciplines. For instance, a separate department of electrical engineering, a Mm-hmm. separate school of, let's say, biosciences or chemical engineering, and so on. So this is so there was no structure available to support interdisciplinary education. The third thing which has happened is जो industry की demand है, वो भी यही है कि they need graduates who have this skills over spreading over a certain number of disciplines. So keeping in view these three trends and requirements, Mm-hmm. internationally we saw many top universities moving in this direction to support and cater for this need in the market. For instance, Purdue University established an interdisciplinary setup. Similarly, Cornell established a brand new setup called Cornell Tech Okay. in Manhattan Island. So keeping in view these best practices, we at NUST took an initiative in 2021 to establish SINES, and it is directly to address these three things which I've mentioned. Firstly, to integrate the research happening at NUST in a way that we can co-locate. We have co-located actually about 30 research labs Okay. in one building, and we have aligned them together so they can work on these interdisciplinary problems. Secondly, to support academic programs which, for instance, require curricula from different disciplines that can be offered from the platform of SINES. So this is the second, let's say, mandate of SINES. And the third is to bring in industry who can then leverage on the presence of these research labs and also the graduates coming out of these research labs and academic programs. So these are the three ingredients we have brought together at SINES, and I'm really super excited how it's progressing, because we have made good progress in terms of attracting about 5 industries in this short time who have opened their design centers, and they are integrating, they are interacting with our research labs, with the faculty and the graduate students. So this in a nutshell is all about SINES. It's pretty great, sir. But 2021 में आपने इस like formally सोचा कि इसको establish करना है. तो I think अगर उसके timeline देखें तो it's like great so far, like within 2 years. So मेरा एक क्वेश्चन है कि वो जो लैब्स हैं जो आप लोगों ने इस्टेब्लिश की हैं, या जो
कोर्सेज आप लोग ऑफर कर रहे हैं वो साइंस की अपनी फैकल्टी है या डिफरेंट स्कूल्स कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके लिए? Yeah, so it's a mix of both. हम्म। Currently, there are three academic programs which are primarily being offered by science ओके। faculty because we inherited those programs from another center which was called Research Center for Modeling and Simulation (RCMS), which was established in 2008. So those programs are currently being handled by science itself. But we are coming up with a brand new program, and in that, actually, 5 schools of NUST are coming together to offer that program, and that is called Climate Change and Sustainable Development. Now, climate change, as you know, is a current biggest challenge the humanity is facing, and it is a very interdisciplinary domain. So, one school cannot offer it, separately. So, science is that ideal platform कि जहाँ से ये program offer किया जा सकता है. So, the 5 schools which have come together are the School of Social Sciences (S3H), जिसमें जो पॉलिसी मेकिंग है क्लाइमेट से रिलेटेड वो पढ़ाई दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन दैट प्रोग्राम. देन वी हैव द एनर्जी सेंटर यूएसपी कैस ई जो एनर्जी परस्पेक्टिव से इसमें कंट्रीब्यूट कर रही होगी. थर्ड इज द स्कूल ऑफ सिविल एंड द स्कूल ऑफ सिविल. नाइस। It's ski. ओ स्की। Third is the school which is called ski at NUST, and that will be contributing in the environmental aspect of the program. Fourth is ASAB, which will contribute from the agriculture and the population side of things. And lastly, of course, science, which has the capability of the providing support in the computational part of the program, doing simulation on climate models and doing data analysis on the data which is related to climate. So this is an example which I could share about the academic programs. सो सर इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना और उसके लिए लैब्स इस्टेब्लिश करना वहाँ उसके लिए फैकल्टी को अरेंज करना ये काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा. सो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप अभी तक फेस कर रहे हैं? एंड इफ वी लुक एट द projects that you are doing right now, can you give us little insights on them as well? So yeah, you're right. Because it's being done for the first time at NUS, it is challenging, and of course there are many things which are, let's say, not clear at the moment, how things will go and so on. However, for instance, जो programs हैं उसमें faculty, because these schools have jointly written the program and got the program approved, so the faculty will be shared from these schools for running this program. जो research labs हैं इस वक्त साइंस में, they are all headed by a PI, the principal investigator, who is a PhD faculty member in most cases, and he or she basically shares their time of the week between the research lab and their academic requirements or academic responsibilities in their parent school. So this is something which was not present before, Yeah. that a faculty member has to divide his or her time of the week between two places. However, it's going very well because we have slightly institutionalized it and defined some manageable targets for all the labs. So therefore, they are geared to achieve those goals on an yearly or quarterly basis. So it's a work under progress, but for now, the results which are coming out, initial results, are very interesting. For instance, one thing which has happened is that postgraduate students, masters and PhD, are being supervised by faculty members from different schools, and they bring in very different perspectives in the research. So it's very common now that a master student will have GEC members from different schools, and science is kind of promoting that. Another thing which has happened is that grant proposals, which are bread and butter for faculty members, उनको लिखने के लिए you always need a good consortium, क्योंकि जो ग्रांट एजेंसीज हैं वो ये देखना चाहती हैं कि आपके प्रपोजल में एंड टू एंड कंप्लीटनेस कितनी है, राइट? आर यू डिलीवरिंग ऑलमोस्ट मार्केट रेडी प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसके लिए यू नीड डिफरेंट पीपल इन द प्रोजेक्ट. So being co-located in the same building facilitates that, because you can have, for instance, a computer science person working with a biological scientist
who brings in biological data, gives it to the computer science scientist, and he does analysis Mm-hmm. on it. So in that way, the proposal's value becomes very high. Thirdly, the research publications which are have come out or starting to come out, they have these co-authors from different departments and disciplines. और उनकी जो रिसर्च की फिर विजिबिलिटी है ना, वो एक डोमेन की बजाय दो डोमेन्स में होना शुरू हो जाती है. Okay. और उससे क्या फ़ायदा होता है कि साइटेशंस उनको ज़्यादा मिलती हैं, विच मीन्स कि जो नस्ट की रिसर्च है उसको विजिबिलिटी ज़्यादा मिल रही है. So these are the 2 or 3 initial benefits I've started to see already in the first 2 years. Well, uh, that's good to hear. सर हमारा क्वेश्चंस अराउंड अभी फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स पे थे. स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा है अभी तक इस सारी चीज़ को लेके. एंड ऑब्वियसली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग इन सीक्स, तो मुझे नज़र आता था कि हम लोग डिज़ाइन में बहुत लैग करते हैं. जैसे आपने अभी बात की कि प्रपोजल्स में एंड टू एंड जो है वो उसकी क्लोजनेस कितनी बेहतर है, वो मार्केट के लिए कितना रेडी होगा. सिमिलरली हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते थे दे आर लाइक शायद वो काम करने में बहुत बेहतर हैं लेकिन डिज़ाइन वाइज वो लैग करते थे, एप्लीकेशन वाइज वो लैग करते थे. सो स्टूडेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक, और कैसे क्या उनके स्किल्स बेहतर हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से. जी बिल्कुल. ऑब्वियसली काफ़ी छोटी विंडो है इस चीज़ को बताने के लिए, बट स्टिल. Yeah, the initial feedback we have got from students is very positive, or just seeing these different labs around them have provided them a bigger world view. जो पहले narrow एक kind of tunnel vision था कि मैं अगर electrical engineer बन रहा हूँ तो I'm just concerned with this, that has kind of be it's kind of been shaken up, और अब वो उनका जो visibility है वो थोड़ी सी बेहतर हो रही है. What we are doing at SINES is inviting a lot of students to come there, and because it has presence of 10 NUST schools actually in one building, it's kind of a mini NUST या inside SINES. तो इन स्कूल से जब वो आते हैं, दे सी के एक ही फ्लोर पे एक डाटा एनालिसिस लैब है, दूसरी उसी फ्लोर पे एक आईसी डिज़ाइन लैब है, उसी फ्लोर पे एक रोबोटिक्स की लैब है. सो ऑल दीज थिंग्स इट एटलीस्ट मेक्स देम थिंक कि हाउ डू दीज 3 थिंग्स कैन कम टुगेदर, राइट. और जैसे मैंने कहा, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो अभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनकी आउटकम ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है. ओके. But we are planning now to go into bachelor's program. So having bachelor programs at SINES would help make these, or generate these engineers जिनकी एक holistic view होगा, who will be taught in a way that they can tackle real life problems. Just to share, आपने डिज़ाइन की बात की, तो स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर साडा की भी एक लैब है साइंस में. So they promote the design thinking approach, which is now actually a must for all science and engineering disciplines. The user-centric design, as we speak a lot about. तो इस लिहाज से I see कि students will also start to get benefit out of it. So my other question, which is a very common question as well, कि जो हमारे fresh graduates हैं engineering के, why they are facing a lot of delay in getting the right kind of opportunities and jobs. And normally मैं अगर इंडस्ट्री के लोगों की बात करूँ, so हम उनसे भी यही सुनते हैं कि वो स्टूडेंट्स लैक करते हैं वो पर्टिकुलर स्किल्स जो हमें चाहिए होते हैं. सो आप इस गैप को कैसे देखते हैं? This is a very interesting debate always. I also interact a lot with the industry, or they say कि उन्हें जो स्किल सेट चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़ में ही पहले से ही सिखा दिया जाए. On the other side, the academia's point of view is कि हम स्टूडेंट्स को बेस नॉलेज देते हैं, और अगर टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इवॉल्व कर रही है कि फॉर इंस्टेंस टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर टूल्स इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, बट दैट पेस कैन नॉट बी केप्ट इन एकेडमिया. करिकुलम में उस तरह नहीं चेंज किया जा सकता. तो इधर से ये आर्ग्यूमेंट आता है कि curriculum only teaches you the base methodologies and concepts, और उसके ऊपर कोई भी लैंग्वेज आ जाए, कोई भी टूल आ जाए, it can be learned in a short time. So this is always a debate going on between industry and academia, but at least it's good to have this debate first of all. But from the academia side, जो कि मुझे अब लगता है कि
वी नीड टू वर्क ऑन स्किल्स. और वो स्किल्स हम अगर करिकुलम में इम्बेड कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम करिकुलम में ना भी इम्बेड करें तो इट कैन बी साइड जो कोर्सेज हैं जो कि उनको मेन जो उनका कोर करिकुलम उसके साथ सिखाए जाए. I call them like upskilling courses, and they can be regularly updated based on how the trends are going. अगर फॉर इंस्टेंस आजकल AI की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो आप डबल ई के स्टूडेंट्स को करिकुलम में भी कुछ दें, सिखाएं, बट देन यू कैन हैव like crash courses on AI and those technologies जो कि उनको रेडी कर लें मार्केट के लिए. एट द सेम टाइम आई बिलीव इस वक्त इंडस्ट्री में जो मैंने देखा है चेंजिंग ट्रेंड, इनिशियली इट वाज जो न्यू हायर्स को देखा जाता था तो दे वर मोस्टली कि टेक्निकल स्किल्स बहुत हार्डकोर होनी चाहिए, बट नाउ आई हैव सीन कि इंडस्ट्री ये कहती है कि जी टेक्निकल स्किल्स हम सिखा देंगे, बट दे नीड टू बी गुड ऑन सॉफ्ट स्किल्स. और recently I was in a seminar by an industry, and I asked the same question to them. और मैंने कहा कि आपके सामने अगर दो चॉइसेस हों कि सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स स्लैश GPA, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? तो इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग. उन्होंने कहा जी सॉफ्ट स्किल्स, कि एक इंजीनियर को सॉफ्ट स्किल्स सिखाना, उसकी पर्सनालिटी को चेंज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है. हम स्किल सिखा देंगे इन अ शॉर्ट पीरियड 3 months 4 months, बट जो उसकी पर्सनालिटी अगर हार्ड कोड हो गई है ना कि वो कम्युनिकेट सही नहीं कर सकता, जो उसके जहन में ही कैन नॉट कम्युनिकेट, ही और शी कैन नॉट कम्युनिकेट, वो टीम प्लेयर अच्छा नहीं है, उसमें डिसिप्लिन नहीं है, वो डेडलाइंस मीट नहीं कर पाता, तो दीज आर रेड फ्लैग्स फॉर देम. सो आई हैव सीन एक्चुअली दिस चेंज इन द इंडस्ट्रियल डिमांड. और मेरा ये ख्याल है कि एज एकेडमिया वी शुड नाउ focus on these more. Although वो theoretically courses में हम कोशिश करते हैं, but through some other interventions हमें ये बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है कि हम soft skills पे build करें. And on the other side, graduation के around या graduation के फौरन बाद we should have something which I call kind of a talent pipeline, कि जो इंडस्ट्री की उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, like graduates coming in on one side of the pipe, and then that pipe could be changed. कि वो जो आजकल फॉर इंस्टेंस अगर एक सर्टन डिमांड है तो दैट you put them through that specific pipe, and the other side then they come out and they are ready on the first day for the industry. So मेरा ये ख्याल है कि it should be a mix of teaching good soft skills at the moment and also through this talent pipeline concept. Yeah, I think it's very good for the students जिनका GPA कम है. So आपने हिम्मत नहीं हारनी. Keep and one day you will get it. Keep it up. So the next question is obviously around the challenges that universities are facing right now in terms of infrastructure of labs, resources, fundings and grants and all. Yeah, so this is a big reality being faced, and universities are not working in isolation. The challenges which are faced at the national level are being faced by academia currently as well, and that reflects in managing the day-to-day activities of a university, especially in the government sector, where the fee structures are pretty low. For instance, NUST, the level, the kind of facilities, both academic, research, and extracurricular it provides, the fee structure is very reasonable. So it's becoming increasingly hard to manage the day-to-day affairs, and also to basically upgrade the infrastructure. However, we are trying to kind of think out of the box to generate our own revenue somehow, so that we can reinvest that revenue to upgrade the labs and provide the student support which they require. So this is what we are trying to do, and it's a ever-going process where we try to find funding from different sources. Even if it's not government, then we are looking for like development organizations
or funding our different research initiatives. Similarly, engaging more with industry, Mm-hmm. so they can fund the different labs, and the research or the prototypes coming out of the labs can then be Yeah. given to those industries. So these are few ideas the university is currently working on to basically bridge that gap of the funding we are facing. So other than that, I have, uh, you can say, हमेशा से ही मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, जो हमारे इंजीनियर्स हैं मोस्टली, जो सीएस के स्टूडेंट्स थे, सीख से, उनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है। Mhm. एज यू जस्ट मेंशन के सॉफ्ट स्किल बहुत मैटर करते हैं। सो आई वांटेड टू आस्क दैट क्वेश्चन कि वो थोड़ा सा जो भरम है Mhm. वो कब आएगा हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल True. in the development of this world right now as well, the future as well. And as we can see, you know, अपने नेबर्स में भी, आईटी के जो लोग हैं, टेक के जो लोग हैं, उनका एक स्पेशल मार्क है, एक इम्पैक्ट है दुनिया में। Yes. और वो शायद स्वैग तो बहुत वो वर्ड होगा, शायद अप्रोप्रिएट नहीं है इसके लिए, लेकिन वो एक कह लें कि कॉन्फिडेंस कब आएगा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में, और आप हम अभी क्या ऐसा चल रहा है कि जिसके थ्रू आपको लगता है कि हम वो पुश कर सकते हैं या पम्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स में? Yeah, I think this is very, very important. As I mentioned, if you're not able to convey what is in your mind or या what you're doing in a very concise and a very effective way, so you will definitely lag behind. और मैं आपको अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान इस वक्त आई बिलीव चौथे नंबर पे दुनिया में फ्रीलांसर्स को अगर हम देखें, एंड ये चौथे से पहले नंबर पे आसानी से आ सकता है बिल्कुल। अगर ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप है ना, ये हम क्विकली फिल कर सकें। ऑल्दो पाकिस्तान हैज़ एन एज एज वेल, बिकॉज हम में से वास्ट मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं दे आर रीजनेबली गुड इन इन स्पीकिंग इंग्लिश, जो कि ज़्यादातर बड़े रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनली हैविंग गुड स्किल सेट इन इंग्लिश। However, coming to your point कि इसको कैसे improve किया जा सकता है, I think it's just by first realizing that you have a communication skill issue या and you need to work on it. और उसके लिए फिर there are different resources, or the good thing in today's world is that information is on at the tip of your fingertips पे, mobile phones के through there are crash courses available कि आप उसमें practice कर सकते हैं। बिल्कुल। डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, इस पर इस पब्लिक स्पीकिंग के जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं। हाउ डू यू स्टार्ट टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन। इवन इन माई रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स आई मेक इट अ पॉइंट कि स्टूडेंट्स को इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जाए, बिकॉज रिसर्च करना एक चीज़ है और फिर रिसर्च को प्रेजेंट करना एक चीज़ है, बिल्कुल। राइट। सो सिमिलरली अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, तो अगर आप उसको सही तरह प्रेजेंट नहीं करते ना, तो वो इम्प्रेशन ही उस तरह का नहीं आता। फाइनल ईयर्स में सही तरह प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू जस्ट मेंशन। या सो इवन इन माई रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम पढ़ाते हैं, आई मेक इट अ पॉइंट कि स्टूडेंट्स को इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए, because doing research is one thing and presenting in an effective and a concise way is a different ball game. Exactly. Similarly, final year projects मैंने बहुत अच्छे देखे, but when they are pitching it और वो present कर रहे होते हैं तो it is not that effective, and उसमें जो audience है उस तक उसकी importance, उसका challenge, complexity पहुंच ही नहीं पाती। So this is very, very important, and as I mentioned कि इसको first of all realize करना problem को, and then sorting it out through practice, as trivial as standing in front of a mirror and presenting to yourself, and having a clear headed mind कि आपने किस तरह अपने points को articulate करना है और फिर present करना है। There are very good resources available online as well जो आपको public speaking में help करती हैं, vocabulary में help करती हैं, and so on. So this is how slowly it can never happen overnight, Obviously. but it over a period of time, the students can see the improvement. So now we'll come to the semiconductors. Okay. And the first question is, can you give us like some insights on the trade war going on between USA and China in this industry, and like how Pakistan can take some benefits out of it? Yeah. So this topic is very close to my heart because it's my field as well.
So this started in like 2017 and 2018 time frame, जहाँ this as it's now called the chip wars started, जिसमें यूएस ने अपनी जो कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर इनमें काम करती हैं उनको बार किया कि एक चाइनीज सबसे बड़ी कंपनी हवावे उसको चिप सेट्स नहीं देनी. नाउ हवावे इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन्स and electronic devices and so on, and it's largely dependent on the chipsets processors coming from out of US. Okay. So having this supply chain blocked, Huawei, kind of was badly affected. तो दिस काइंड ऑफ स्टार्टेड अ चेन रिएक्शन कि चाइना ने ये फील किया कि हम तो बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं यूएस पे फॉर देयर मेन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. और एज अ काइंड ऑफ रिएक्शन और रिस्पॉन्स दे डिसाइडेड कि बाय 2025 they will be manufacturing 70% of the chipsets themselves. Okay. And for that they pumped in $155 billion into the semiconductor industry, established new schools of IC design dedicated for that because they suddenly needed huge manpower. अच्छा, इसका एक और भी इफेक्ट हुआ कि जो बाकी मुल्क हैं या बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं उन्होंने भी फील किया कि ये जो चाइना ने फेस किया है वो एक दिन वो भी फेस कर सकते हैं. बिल्कुल. बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन यूएस एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग दे आर प्रिडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन ताइवान, जो जहाँ से majority of the chips are fabricated in a couple of fabs. So they also felt this insecurity, you could say. Or as a reaction, South Korea, for instance, pumped in $450 billion कि अब वो manufacturing में lead लेंगे. European Union, they pumped in about 12 billion euros in something called the CHIPS Act in 2021. इसी तरह कनाडा ने इसमें पैसे डाले और then our neighboring country also invested, India also invested a lot in it. So this whole ecosystem was kind of shaken up in this period. और उसमें there's a huge opportunity for Pakistan. I'll tell you why. Mm-hmm. Because if you break up semiconductor ecosystem, you could break it up into three parts. Okay. The first part is the design, जिसमें जो chipsets को design किया जाता है, and by design I mean कि उसके architecture, उसके schematics, circuit schematics और layout वगैरह. Then this layout is then sent for fabrication. So that forms the second part of the semiconductor ecosystem. और वो जो fabrication है, it happens in very high-end fabrication facilities, जिनको हम fabs कहते हैं. और वो fabs 7 से 8 मुल्कों में इस वक्त रह गई हैं because they are very expensive to set up, more than $10 billion required for one fab. They are not in every country. And the third part of the ecosystem is the assembly of the chips and the testing of the chips. So that's how basically the whole ecosystem is linked. And different countries focus on different parts. Now, because this huge funding in different countries have gone in the last 3 to 4 years. Yeah. So there is opportunity in all three of them actually. But Pakistan में I personally believe कि जो design वाला part है ना, जिसको हम semiconductor में कहते हैं fabless. तो fabless, which means without fab. तो fabless में what do you need? You need manpower with brains and you need software tools to design. Okay. And you don't need fab. So software tools, which are called EDA tools, electronic design automation tools, and you need trained manpower. Okay. And then you can basically get a lot of design work sitting here in Pakistan. I would analogy के तौर पे अगर आप ये सोचें तो जिस तरह सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग होती है, इस तरह चिप डिज़ाइन आउटसोर्सिंग होती है. और जो फैबलेस डिज़ाइन का पार्ट है, दैट इज़ अबाउट 33% ऑफ द ओवरऑल मार्केट साइज. ओके. सो जस्ट टू शेयर विद यू द मार्केट नंबर्स. सेमीकंडक्टर जो मार्केट है 2022 में इट वाज अबाउट $600 बिलियन और इसकी प्रिडिक्शन है कि बाय 2030 इट विल गो टू $1 ट्रिलियन. सो यू कैन सी के 1/3 ऑफ दैट इज अबाउट $350 बिलियन. और उसमें से if we are able to take 2 to 5% share, that's a huge amount. Yeah. So therefore पाकिस्तान के लिए एक huge opportunity है कि हम अपने engineers को
इस डोमेन में ट्रेन करें, बिकॉज ये है थोड़ी सी नीश डोमेन है और थोड़ी सी चैलेंजिंग डोमेन है, बट इट कैन बी टॉट, राइट? Yeah. Electrical engineers, telecom engineers, software engineers, computer engineers can all work in this domain. Or what they require is an updated curriculum with elective courses in IC design. और अगर वो नहीं हो सकता, let's say for whatever reason, so just upskilling, as I mentioned earlier, upskilling of about 6 months in any of these Courses. design areas. Okay, IC design, it is divided into like digital IC design, analog IC design, mixed signal design and RF IC design. डिजिटल आईसी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, और फिर एनालॉग, फिर मिक्स सिग्नल, और आखिर में RFIC. सो इफ़ वी आर एबल टू generate manpower, then it could, we could take a journey like Malaysia took, like India took 20 years ago, but it's never too late to start. Yeah. And there's a lot of opportunity, lots of foreign exchange which can come in due to this industry. Companies can open their IC design centers Yeah. here and recruit Pakistani engineers. And this has actually started to happen. Just to share with you, in the last 2 years, about 6 to 7 companies have come into Pakistan. Okay. It's not well known, because they are not, so well known, but in the general technology sector. But because I'm from the industry, I can tell you that 6 to 7 companies have come in, and they have recruited about, I would say, 250 engineers. But in my discussions with them, वो यही कहते हैं कि हमें खुद ट्रेन करना पड़ता है, हम हायर करते हैं इंजीनियर्स और हमें खुद ट्रेन करना पड़ता है. So that's where academia can come in and update the curriculum and catch this wave, which is current and which can give us a lot of value. Well, I was not informed about that fact, and like मैं सोच रहा था उस पॉइंट पे जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे कि इस फील्ड में क्या जॉब्स होंगी, एंड नाउ यू जस्ट इन्फॉर्म्ड अस. आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. एंड इज देयर एनी काइंड ऑफ लाइक प्राइवेट tech companies from Pakistan or some young entrepreneurs in this field also started to outsource the talent? Yeah, be still it's not going. So the companies which have come in are basically of Pakistani expatriates, Okay. From the Silicon Valley, for instance, and they are veterans of the Silicon Valley, and now they saw this opportunity, and actually the design cost and the design workforce is becoming very limited, and it's becoming very expensive in other countries. So because everyone is kind of looking for themselves now. Yeah. So China में, India में, Malaysia में वो अगर जाते हैं अपने design houses खोलने, so the people they get are very expensive. So in Pakistan, first of all, we have a lot of the youth and a regular pipeline of engineers being produced from different universities. और साथ ही साथ the cost for hiring engineers is still much lesser than other similar countries. So therefore ये ज़्यादातर जो companies आई हैं वो ऐसी हैं जो पाकिस्तानी expatriates की हैं, उन्होंने यहाँ अपने design houses खोले, and they have hired anywhere between 50 to 100 engineers per Nice. company. At the moment, even at NUST, we have a company in SINES, which is a company based out of Silicon Valley, and they have offices in about 5 countries, and their head office of Pakistan is in NUST, and they have hired a lot of NUST graduates and doing their work. So this is how it is booming, and I see कि इसमें और भी कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता आएंगी. बड़ी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए हमें एक ना क्रिटिकल मास चाहिए. Okay. So, for instance, the likes of AMD or Intel or NVIDIA, इनके लिए they would be interested if we have people in thousands. Okay. At the moment, we have people in hundreds, a few hundred, which are trained engineers. So, critical mass जब हो जाएगा ना, तो खुद ही ये companies attract होंगी, because at the end of the day, it's a matter of business. So, जहाँ business sense बनाएगी चीज़ उनके लिए, they will come. सो सर इस वेव के चलते हुए यूनिवर्सिटीज़ भी सीरियस हुई हैं इस चीज़ को लेके, लाइक स्पेशली सेमीकंडक्टर्स के कोर्सेज को लेके, एंड देयर नाउ दे आर
trying to implement them Yeah, in in a Pakistan, the specific way. funny thing is, yeah, that you could count the IC design faculty Exactly. across Pakistan, and we have a very closely knit network, or we know each other very well. We have been supporting each other in different ways, and universities have been supportive as well. So, for instance, in NUST, we launched the Masters in IC Design in 2021, and the response was pretty good. एंड जस्ट यू कुड इमेजिन कि डिमांड कितनी है कि मास्टर्स प्रोग्राम यूजली 2 साल का होता है, Mm-hmm. तो स्टूडेंट्स उनमें से जस्ट आफ्टर डूइंग 2 semesters ऑल ऑफ देम हैव गॉट जॉब्स. Oh, nice. सो सिमिलरली जो अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं, जो स्टूडेंट्स इलेक्टिव्स ले रहे हैं, VLSI डिज़ाइन या डिजिटल डिज़ाइन और मिक्स सिग्नल डिज़ाइन के इलेक्टिव्स ले रहे हैं, सो दे आर बीइंग डायरेक्टली पिक्ड अप by these companies and being paid very well in comparison to other. So universities, yes, have been receptive to this change, and they are, for instance, including the elective courses. However, the interest from the student is a bit lagging. और वो अगेन वो Yeah. जो एक इस वक्त हवा चली हुई है बिल्कुल. AI की और कंप्यूटर साइंस की, उस वजह से they are a bit hesitant to come to this side. However, this is a very exciting field, a very I would say ऐसी फील्ड जिसमें फिर अगर you get trained, so the competition is lesser, Yeah. because in AI now everyone is talking about AI. तो Yeah. EE वाले भी AI कर रहे हैं, computer science, software, you name it. AI, data science की भी अब bachelors आ गए. So the competition in that field is going to be a lot, and in comparison to this, the competition is lesser. I would like to also share through this podcast के NUST में हमने एक थोड़ा सा और बड़ा स्टेप लिया है, and alhamdulillah I am the lead of that initiative also. What we have proposed to the government of Pakistan is something called the NUST Chip Design Center, Okay. and this is on the same lines as, for instance, VDEC in Japan, IDEC in Korea, and CNC in Canada. What this center does is basically, जब भी IC डिज़ाइन का काम करना होता है ना, तो कुछ हर्डल्स आती हैं. वो हर्डल्स क्या हैं कि आपको ये EDA टूल्स के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, Mm-hmm. which costs a lot. Then you need compute power Yeah. to run those simulations. Thirdly, you need training, जिसकी मैंने पहले बात की कि it's a very kind of specialized field, so आपको हो सकता है UG प्रोग्राम से वो स्किल सेट ना आती हो, तो you need to train people. So हर यूनिवर्सिटी में ये चैलेंज है. Yeah. अगर यूनिवर्सिटी करना भी चाहे ना IC डिज़ाइन में काम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास टूल्स नहीं होते. एक चीज़ और, जो प्रोसेस डिज़ाइन किट्स होती हैं जिसको यूज़ करके डिज़ाइन किया जाता है, फाउंड्री से प्रोसेस डिज़ाइन किट्स लेके दी जाती हैं, विच आर कॉल्ड PDKs, उनको यूज़ करके IC डिज़ाइन की जाती है. एंड थर्ड इज द ट्रेनिंग एंड द कंप्यूट पावर. फोर्थ इज कंप्यूट पावर. तो ये 4 हर्डल्स जो है ना, व्हाट माय विजन इज कि हम इन चारों हर्डल्स को बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और NUST के लिए खुद भी इस हर्डल्स को ख़त्म कर दें, Yeah. by having the tools available in a central place, then providing them the PDKs, providing them the training, and providing them the compute resources. So this is my grand vision कि इसको हम execute करें. And alhamdulillah, it has been appreciated, and we have got the nod from the government to set this up in very near future. So आपके podcast से ही actually मैं ये announce करने जा रहा Well, हूँ. that's good to have. ये पहली दफ़ा to a broader audience. Until now it was kind of अभी NUST में known थी, but it will then from your platform go out, and hopefully the goal is कि हम national impact create कर सकें इस center से, और जो मैंने पहले आपको opportunities बताई वो हम accelerate कर सकें इस center से इंशाल्लाह. So sir, अभी हमने बात की इंडस्ट्री की, तो व्हाट्स द रीज़न कि हम लोग मोस्टली फिजिकल प्रोडक्ट्स में लैक करते हैं? चाहे वो स्टार्टअप कल्चर हो, चाहे वो कंपनीज हो, मोस्टली हमारी डिपेंडेंसी यही है कि हम यहाँ किसी सेकंड या थर्ड मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और फिर वो कंस्ट्रक्ट करेगा, हमारा पूरा डेवलप करेगा फिजिकल की प्रोडक्ट को. सो हाउ यू सी दिस इज गोना चेंज ओवर द टाइम, एंड व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर दैट? इसमें in my opinion there are 2 to 3 bottlenecks or hurdles. First यही है कि जो government sides जो support है ना for hardware. For instance, I tried to work in the domain of wearables, and we had a lot of challenge in getting components from abroad Yeah. in a short amount of time,
और उन पे जस्ट इवन एज एकेडमिया वी हैड टू पे अ लॉट ऑफ कस्टम्स फॉर इट इन और उसको क्लियर कराने में बहुत टाइम लगता था एंड सो ऑन। जो दूसरी एक उसमें हर्डल मुझे नज़र आती है वो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की है कि देयर इज अ लैक दैट हैज़ चेंज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, बट स्टिल इट इज़ नॉट अप टू द मार्क कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, फॉर इंस्टेंस वेरेबल्स को मैन्युफैक्चर कर सकें एंड सो ऑन। एक सिंपल सी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो कि 3D printers is something for prototyping quickly, Yeah. but it is very difficult to get a 3D printer imported into Pakistan. You need a lot of approvals for that, and it basically वो ये सारे इकोसिस्टम को ना वो कैप कर देता है आपके। आप थॉट प्रोसेस होते हैं ना, यू वांट टू योर माइंड टू बी फ्री कि मैं कुछ भी सोचूं और फिर मैं वो कर पाऊँ। बट इस केस में यू आर हैम्पर्ड इन डिफरेंट स्टेप्स, और उसी वजह से फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो दे टेंड टू टेक द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ कि मैं कोई सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड स्टार्टअप कर लूँ, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स इंपोर्ट का चैलेंज आएगा, 3D प्रिंटर्स नहीं आ सकते, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू सी के सॉफ्टवेयर एक्सेलरेटर्स बहुत हैं और इंक्यूबेटर्स बहुत हैं, बट यू डोंट सी अ हार्डवेयर फोकस्ड एक्सेलरेटर इन पाकिस्तान, क्योंकि देयर आर सो मेनी हर्डल्स इन बिटवीन, और स्टूडेंट की साइड से भी वो इंटरेस्ट नहीं है। सो आई सी कि इसका एक प्रॉबेबल सोल्यूशन ये हो सकता है, वी नीड टू हैव अ डिस्कोर्स ऑन दिस एट अ नेशनल लेवल, और एक पॉलिसी डिवाइस होनी चाहिए कि जो इसको फैसिलिटेट करे। द प्रीसीडिंग गवर्नमेंट डिड सम एफर्ट्स, आई वुड से उन्होंने जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 में अनाउंस की, और दैट हैज़ ब्रॉट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इनटू पाकिस्तान। 3 or 4 कंपनीज हैव सेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हियर कि हाँ असेंबली स्टार्ट हो गई है, राइट, मोबाइल फोन्स की। पहले तो एज अ सेट इंपोर्ट होता है ना, अब यहाँ सेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग PCBs एंड चिपसेट्स एंड सो ऑन। और उनका अगला गोल ये था कि मोबाइल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस चार्जर है, चार्जर को यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाए, राइट। सो ये दीज वर सम गुड इनिशिएटिव। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी उसका भी यही रोड मैप उन्होंने डिफाइन किया था कि पहले हम लाइक वो पूरी लेके EVs लेके आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, बट देन विल गो टू किट्स और मैन्युफैक्चर देम हियर, और फिर उन किट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड सो ऑन। So it's going to be a long journey, I would say, but it's a journey worth taking, inshallah. Yeah. सर विद दैट हमने AI की काफ़ी बात की, लेकिन हमें खुद भी अब AI के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि AI क्या रोल प्ले कर रही है अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। ऑब्वियसली डिज़ाइन में वो हेल्प कर रही होगी कहीं ना कहीं, एंड अदर देन दैट इन टेस्टिंग एंड predicting some future solutions as well. Yeah, this is a really current debate at the moment. I was looking at it in kind of ये डिस्कशन हुई थी जैक मा में और एलॉन मस्क में अबाउट AI, कुछ सालों पहले की बात है। जैक मा वाज सेइंग AI कैन नॉट बी बेटर देन ह्यूमंस एंड सो ऑन, और उसमें एलॉन मस्क इस तरह के रिएक्शन दे रहा था कि you don't know. सो वो जो है ना इट विल काइंड ऑफ टेक ओवर, and with this chat GPT coming up और फिर ये GPT-4 coming up in the last week, you can just imagine कि कहाँ रुकेगा, so the opportunities and I would say challenges are at the same time huge, और अभी ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं है। हम ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, we'll see how it basically shapes up, but जब चैट GPT आया तो इमीडिएटली एकेडमिक सेक्टर में एक वरी हो गई कि ये स्टूडेंट्स इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, इसको कैसे ट्रैक या ट्रेस किया जा सकता है कि एक असाइनमेंट है फॉर इंस्टेंस वो चैट GPT से जनरेटेड है या उस स्टूडेंट ने खुद की है। तो और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें बड़े डिफरेंटली रिएक्ट किया है कि सम यूनिवर्सिटीज़ हैव गॉन टू मैनुअल असाइनमेंट्स के हैंड रिटन असाइनमेंट्स होगी इंस्टेड ऑफ टाइप्ड असाइनमेंट्स, एंड some have reacted in another way. So it's an ongoing debate. As far as your question, जो कि semiconductor was a very, I would say, manual जो design है ना वो kind of heart to heart और brain to brain transfer होता था. It used to be thought like that कि जो expertise है ना बहुत सी चीज़ें books में भी नहीं मिलती,
ओके। और वो इंडस्ट्री में आप सीखते हैं और फिर अपने सीनियर से सीखते हैं और फिर आप अपने जूनियर को सिखाते हैं एंड सो ऑन. सो इस तरह वो ट्रैवल करती है जो स्किल्स होती हैं आईसी डिज़ाइन की. बट लेटली लॉट ऑफ रिसर्च हैज स्टार्टेड टू कम इन. कुछ कॉन्फ्रेंसेज में अब सेशंस डेडिकेट हुए हैं एआई इन सेमीकंडक्टर, और आई सी इट प्लेइंग अ रोल. और उसमें इवन जस्ट टू शेयर विद यू कि जो चैट जीपीटी है इसमें, इफ आई टॉक अबाउट डिजिटल आईसी डिज़ाइन, तो उसमें वेरीलॉग या VHDL का कोड, if you tell them to write an adder, 2-bit adder, ओके। तो it will do it for you. Any ओके। language actually, chat GPT is able to produce a code. सही होता है गलत होता है ये आपको चेक करना पड़ेगा, but it is able to generate. तो इसी तरह जो लेआउट है ना आईसी डिज़ाइन में, दैट्स अ वेरी मैनुअल एंड cumbersome process, स्पेशली इन द एनालॉग, मिक्स सिग्नल एंड RF आईसी डिज़ाइन. जो डिजिटल में है उसमें काफ़ी ऑटोमेटेड है, बट ये जो बाकी तीन है इसमें इट रियली इज पर्सन डिपेंडेंट. पीपल से लाइक लेआउट इज आर्ट एंड साइंस, तो इसलिए वो पर्सन स्पेसिफिक है. बट आई हैव सीन नाउ सम पीपल ट्राइंग इट आउट कि उसको भी ऑटोमेट किया जाए बाय ट्रेनिंग द एआई एल्गोरिदम कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं लेआउट करने की, एंड देन ट्राइंग इट आउट. सिमिलरली जो टेस्ट रूटीन्स हैं, टेस्टिंग में ये एआई का काफ़ी रोल है कि बिकॉज वंस अ चिप इज़ मैन्युफैक्चर्ड इट हैज़ टू बी रिगरसली टेस्टेड ओवर डिफरेंट लॉट्स, ओवर डिफरेंट डाइज, और वो बहुत सारा डेटा होता है. तो उस डेटा में से पैटर्न्स निकालना कि अगर 1 मिलियन चिप्स हैं तो उसमें से कितनी ख़राब होंगी पोटेंशियली या कितनी सही नहीं होंगी, तो उसमें भी एआई इज़ प्लेइंग अ रोल. सो आई वुड से कि इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ रोल, and things will be clear in about couple of years time. Yeah. So sir, talking about the talent, we see that इससे पहले या नॉर्मली एक ट्रेंड चलता आ रहा था कि यहाँ तो लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, लड़की होगी तो वो डॉक्टर बनेगी. बट अभी रिसेंट टाइम्स में बाकी डिसिप्लिन्स में बहुत ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए हैं. एक वेव नज़र आ रही है कि कह लें, हेट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक है कि अब इंजीनियर के नाम पे थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है लोगों को. ये डाउन द रोड लाइक 5-10 years अच्छी खासी इम्पैक्ट होगी इसकी हमारी टैलेंट प्रोडक्शन के ऊपर. हाउ यू सी दैट एंड व्हाट आर द स्टेप्स आई थिंक you think we should take to actually glorify engineering in the better way, and we obviously need tech specialists, and आपको क्या लगता है कि वो कौन से steps हम ले सकते हैं? I think it's a very important question. इसमें if you look back तो I see ये जो different domains और disciplines में interest या disinterest है ना, it's kind of goes up and down in cycles. So going back 20 years when I graduated, उस वक्त telecom का बहुत boom था. 2.5G, 3G आ रहा था. A lot of people went into telco. But now you see that telecom engineering is not that fancy anymore. Yeah. You come to software side, so it is the current era. Yeah. Just because of what we see around us, the requirement of software engineers in AI, in data analysis, in mobile app development, in web development, computer vision, and so on. So that's the reality at the moment, right? और इससे पहले engineers were high in demand. So it's to do with the supply and demand. ठीक है, तो इस वक्त the academia, the student interest basically drives from market demand. तो जो market demand इस वक्त है, it is software at the moment. There's no harm in believing that. At NUST also we have seen this trend over the last 4 years. हमने कुछ डेटा अब देखा है कि हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, they were on top in terms of merit, and then जो है वो current वो अब जो है CS और सॉफ्टवेयर ऊपर है, engineering has gone on to third. NUST में as such इतना इशू नहीं है because alhamdulillah we get a lot of applicants, good applicants, and our engineering programs are pretty well. I'm just talking relatively in comparison to software and CS. अब इसको हमने हल कैसे करना है? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगेन वी हैव टू, मे बी नॉट वी बट द पॉलिसी मेकर्स हैव टू वर्क ऑन द मार्केट साइड, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ होगी ज़्यादा
or tech industrialization. For instance, Mm-hmm. establishment of tech hubs, um, these STZAs कि physical spaces तो announce हो गई, but companies did not start coming as were expected. ठीक, so वो जब कंपनीज आनी शुरू होंगे, टेक्नोलॉजी कंपनीज, हार्डवेयर ओरिएंटेड Mm-hmm. कंपनीज, तो मार्केट डिमांड जब जनरेट होगी, सो दिस इज गोइंग टू गो बैक इन माय ओपिनियन. So this is probably not in academia's hand at the moment, but it has to be externally driven, and then Mm-hmm. the interest will come again, inshallah. इंटरनली जो मेरे जहन में एक आइडिया या एक सोल्यूशन है शॉर्ट टर्म, हाउ डू जो सर कैसे ग्लोरीफाई किया जा सकता है, आई थिंक कि हमें डिज़ाइन थिंकिंग की तरफ जाना है. Mm-hmm. इंजीनियरिंग को वो बहुत काइंड ऑफ बोरिंग कर दिया गया. वी हैव टू मेक इट मोर कोलैबोरेटिव. आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टीच लाइक मिलेनियल्स एंड देन जेन जीज. Yeah. ठीक है, तो मुझे वो डिफरेंस नज़र आया कि हाउ द मिलेनियल्स यूज टू रिएक्ट इन अ क्लास, और उनका अटेंशन स्पैन क्या था, और जेन जीज का अटेंशन स्पैन. I hope हमारा बेहतर था. यस यस, आई कैन जेन जी वाले मुझसे नाराज ना हो जाए, बट ये कि इट इज़ अ रियलिटी कि ये जनरेशन डिफरेंट है. सो इस जनरेशन को किस तरह अट्रैक्ट करना है उनको, और उनको किस तरह इंटरेस्ट पैदा करना है. वी हैव टू टैकल फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आइडेंटिफाई कि ये एक इशू है. इफ वी ट्रीट देम द सेम वे जिस तरह Yeah. हमें पढ़ाया गया था, या इन सब विषयों पर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. Yeah. सो वी हैव टू अडैप्ट, एंड फॉर दैट आई बिलीव कि इस वक्त इनकी जो लर्निंग की है वो पीयर टू पीयर ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोलैबोरेटिव में बहुत पसंद करते हैं. और इनको हम अगर डिज़ाइन थिंकिंग की तरफ से लेके आए ना, तो दैट विल क्रिएट देयर इंटरेस्ट. सो दिस इज व्हाट माय इनिशियल रिस्पॉन्स वुड बी. So आपका क्या ख्याल है जो कंटेंट इंडस्ट्री है, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, how they can help induction of engineers and tech specialists in the academics and in the industry? Because when I see, like, if we see in the Hollywood, we have some movies on you know जिन लोगों ने नोबेल प्राइजेस लिए या कुछ इंजीनियरिंग में इनोवेशंस की. Yeah. We don't see that here, and especially in this region. So how आपको क्या लगता है how we can help this? I think the media, people like you can play a big role in this. क्योंकि I feel there's a lot of good work Mm-hmm. we are and people in Pakistan in the academic sector, in technology sector are doing, but it's not made available for public consumption in Mm-hmm. a interesting way. So we see some simply made interviews or videos, but they don't create that impact. So we need this professional kind of videos or success stories to be published from platforms, and then marketed at the right time, like Mm-hmm. prime time, कि ये हमारी success stories हैं. These are people who are kind of hidden heroes जो अभी तक लोगों को पता नहीं थे, but अब ये काम करें. I know companies, I know engineers, PhD people who are making things here in Pakistan and exporting to West and beating a lot of other countries and competing at the very top level. Nice. But a lot of people don't know about it. Yeah. So this is what we really need to get the media to generate to content generate around content these stories. around these stories, and also use the influencers. हमारी in the influencer community have a lot of following, but the topics are majority related to entertainment, which are good in a way as well, or they are about sports a lot of time, or celebrities. But technology को जो है वो लोगों तक पहुंचाने का जो स्पेस है वो बड़ी कम है, और उसमें there's a lot of room, I would say. और हमें ये उम्मीद है कि someone or few of the people who can contribute in this and get the message across. So is there any stories you would like to share, especially related to tech space, like some good stories that you think we can document or we can get some inspiration to make content around? Yeah, definitely. अब जैसे just to share कि NUST के अपने faculty members हैं जिन्होंने health care sector में बहुत काम किया है,
and they have made diagnostic devices जो कि अभी हॉस्पिटल्स में यूज हो रही हैं, Okay. and they have gone through this whole process of conceiving the device, testing, of course designing and manufacturing the device, and then उसको टेस्ट किया, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स किए, उसको अप्रूव कराया, एंड दे आर इन द हॉस्पिटल, बट वो वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट. ठीक है. सिमिलरली देयर आर कंपनीज जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी काम कर रहे हैं इन द प्राइवेट कैपेसिटी, और उनके जो ड्रोन्स हैं दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड. देयर आर पीपल वर्किंग इन द ऑटो इंडस्ट्री, वो इधर ऑटो इंडस्ट्री के कुछ पार्ट्स बनाते हैं जो कि दे आर अगेन एक्सपोर्टिंग और गिविंग टू लोकल मैन्युफैक्चरर्स, बट इट्स नॉट बीइंग told, the stories are not being told. Yeah. On the software side, a lot of good work is being done in AI, in computer vision, in surveillance. GIS में बहुत सारा काम हो रहा है, using GIS to basically see what has happened in Pakistan for the last 20 years in, let's say, urbanization. So we have faculty members जिन्होंने satellite imagery पिछले 20 साल की लेके उससे ये इंफॉर्मेशन निकाली है कि इस्लामाबाद, फॉर इंस्टेंस, इस्लामाबाद में अर्बनाइजेशन ने क्या अफेक्ट किया है, डिफॉरेस्टेशन कितनी हुई है, और दिस इज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसी मेकर्स. सो ये इंफॉर्मेशन अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचे एंड वी क्रिएट अ बिट ऑफ नॉइज अराउंड इट, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में आ सकता है. सिमिलरली फ्लडिंग, फॉर इंस्टेंस, urbanization का direct impact जो होता है वो urban flooding में होता है, which we have seen in Islamabad in the last couple of years. So ये वो technology की interventions या technology के projects हैं जो कि market की जा सकते हैं. Just a few examples, but there are many more. Yeah. So we need to reach out to these gems and get the content out. And how you see the integration of marketing and engineering, especially when you're heading science, because I see a lot of engineers who जो MBA करते हैं and then this go for marketing. But अगर initially ही अगर उन्हें marketing I think थोड़ी courses की form में या practically products की form में अगर वो उसका hands on experience हो, I think they can do better in that. Yeah, definitely. This is also something I really think about. And actually I've taken one initiative in this direction. At SINES we are setting up a brand new makers lab, और makers lab में what I want to do is a course जिसमें 3 component उनको engineers को पढ़ाए जाएं during their engineering, right? What are those 3 things? First is design thinking, कि एक कोई भी आइडिया आता है ना, हम इंजीनियर्स वी आर टू ब्लेम कि हम चीज़ पहले बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इसको यूज़ कौन करेगा, बट we don't include the user in the loop right from the first day. So design thinking actually वो फील्ड है जो कहती है कि नहीं, it should be a user centric design, कि आपने यूज़र से पूछना है कि उसको चाहिए क्या, और फिर उसको अपनी टेक्नोलॉजी नॉलेज यूटिलाइज करके उस यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है. सो इंजीनियर्स को जितना जल्दी ये हम सिखा सकें ना उतना ही बेहतर है. द सेकेंड कंपोनेंट इन दैट कोर्स इज़ अबाउट रैपिड प्रोटोटाइपिंग. ओके, अगर आपने एक आइडिया कर लिया है सो उसको हम बड़े ट्रिवियल मटेरियल से किस तरह क्विकली प्रोटोटाइप कर सकते हैं. इट कुड बी लाइक इवन पेपर, इट कुड बी कार्डबोर्ड, इट कुड बी प्लेडो, और उससे आप प्रोटोटाइप करें आपकी, अगर वो हार्डवेयर ओरिएंटेड. it's a like initial stage before like MVP. Yeah, it is initial stage. वो एक वर्किंग हार्डवेयर नहीं है, but it's just कि जो आपने माइंड में उसका इमेज कंसीव किया है वो देखने में कैसे लगेगा. और ये एक इटरेटिव लूप होता है यूजर के साथ कि यू मेक दैट मॉडल एंड यू गो बैक टू द यूजर, इज दिस व्हाट यू रियली नीड, और नहीं कहते तो यूजर कहता है नहीं मुझे ये नहीं, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए. सो यू कैन डू दैट ट्वीकिंग एट दैट वेरी कंसेप्शन स्टेज, एंड इन कंट्रास्ट टू कि आप सब कुछ बना लें और फिर यूजर के पास जाएं कि जी मैंने बना लिया, तो कहनी ये तो मुझे चाहिए नहीं था. So this is the whole design thinking approach. The third component of that course is about lean startups and business model canvas. So this is जो एक movement चली है, I think इसको 10 साल 12 साल हो गए हैं कि startups have to be lean and they should basically in a very concise way, there are 9 blocks of that business model canvas. And you can put your whole idea into that one page sheet of a business model canvas. और उसमें पूरे स्टार्टअप की हर चीज़ जो है ना वो आपके सामने आ जाती है.
तो ये 3 कंपोनेंट्स हम इस मेकर्स लैब के अराउंड जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह फ्रॉम फॉल 2023। एंड द आइडिया इज़ कि जितने ज़्यादा इंजीनियर्स को हम लेट्स से अपनी नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स करवा दें, तो देन वो अपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, बिकॉज दे नो डिज़ाइन थिंकिंग, दे नो हाउ टू प्रोटोटाइप, एंड दे नो कि इसको प्रोडक्टाइजेशन की तरफ कैसे लेके जाना है, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। सो दिस इज़ हाउ आई सी कि हमने उनको एजुकेशन के दौरान अपस्किल कैसे करना है। Nice. So, sir, what are the you know insights that you have so far from the startup community? Obviously, आपके बहुत से students हैं जो अब entrepreneurship की जर्नी पर हैं, and I think 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है. We have a lot of incubators as well. And what are your, like, you can say, tips for the young generation कि वो अपने ideas को, अपने business models को किस तरह से success stories में convert कर सकते हैं? Yeah, Maybe some learnings, hard learnings as well. definitely. Personally, I've also start worked on some ideas with the ambition कि startup में convert होंगे. Some of them were then closed, and then I've seen also many students who took this tough journey actually Yeah. in the Pakistani context कि startups वो बनाना चाहते थे and so on. But मेरे ख्याल से कि the things are lot better than they were maybe 10 years ago. Mm-hmm. In 2021, you must be knowing कि तकरीबन 600 or 700 million dollars VC funding पाकिस्तानी स्टार्टअप ने रेज की है, and this didn't happen overnight. ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ठोकरें खाई, स्टार्ट किया, then reiterated, pivoted, and then locked on to the right idea और उस पर उसने फंडिंग जनरेट की. मेरे ख्याल से कुछ जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना इन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस है Mm-hmm. कि दे नीड टू बी पेशेंट इन बिकॉज एक पीयर प्रेशर होता है व्हेन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट के ऑन द राइट साइड यू हैव समवन joining FMCG and starting earning a 3-6 digit salary, and then on the other side someone joining the government sector having a pakki job, Yeah. and then you are in the middle thinking you don't know कि आप कब earn करना शुरू करेंगे. ठीक है Exactly. ना. So वो जो peer pressure, so entrepreneurship is not for everyone. It is something of a passion within a fire in a person जो एक problem solving mindset रखता है, और उसे एक problem नजर आती है but he can't get over with it कि मैंने इसको solve करके छोड़ना है. And he then or she takes Yeah. a leap of faith to do that. But उसमें जो कुछ लोग होते हैं वो स्टार्ट करने से पहले ही हो जाते हैं, they kind of lose hope. Patience is the key. और बहुत से लोग कहते हैं कि फंडिंग नहीं है तो फिर नहीं हो सकता, बट लीन स्टार्टअप्स में का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि जी you should start lean as much as possible and then try to reach the MVP stage and test, reiterate, and then move on. Another tip is to join these very nice incubators Mm-hmm. जो कि पाकिस्तान में भी है और इंटरनेशनली भी फ्रीली अवेलेबल है. Just taking a name of Y Combinator. Y Combinator, आपको उधर जाना या सिलेक्शन भी ज़रूरी नहीं है. They have this something called startup school every summer and winter. 3 महीने का कोर्स होता है. The best content is made available to you. ऑनलाइन आपके ग्रुप्स बन जाते हैं. You can work on your idea. बट वो एक डिसिप्लिन और परसिस्टेंस चाहिए. जो वो आपको गाइड करे तो वो आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं आइडिया में. Another learning which I would share is कि once you're making a team for doing a startup, it is the most important thing. So एक जनरल टेंडेंसी पाकिस्तान में देखी है कि दोस्त इकट्ठे हुए and then उन्होंने कहा जी let's do something together, but it's probably not aligned to what the requirement of the startup is. Yeah. Right? So वो similar profile के लोग हैं, maybe all engineers, right, or maybe all business people, but they have a tech startup. Yeah. So this is something very important. You form the right team, and you have things written between yourselves, and have discipline and have trust as well as each other's back. Yeah. Through ups and downs Bilkul. of a startup, because it's not a linear journey at all. So that is very important. I would say, just to reiterate, patience
होना चाहिए, टीम फॉर्मेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो joining the right place as an incubator and upskilling yourself, because again startup जो है वो उसके लिए आपको बहुत डाइवर्स किस्म की नॉलेज चाहिए. You need like pitching skills, you need accounting, you need marketing skills, और ये आपको सेल्फ लर्निंग की में मुश्किल होता है सीखना. बिल्कुल. So you need some guidance in that aspect. I think you're spot on, especially the team factor. There's an like a TED talk as well available on YouTube. Mm-hmm. It's about startup culture, and they took like success stories, like all the big, successful companies and the big failures, and they evaluated everything. Mm-hmm. So the number one thing is the time. The second thing is your team, and the third thing is your idea. So team is very important. And I still remember once जब हम आपके ऑफिस विजिट किया था, we were discussing the idea of detecting the front foot ball, the no ball in the real time. So हमने आपसे बात की थी, मैं I'll ask you सर, ये कोई और भी तो कर सकता था बट नहीं किया अभी तक. एंड यू सेड के इट्स नॉट कि कोई और कर सकता था, जब आप कोई चीज़ करते हो तो आपको पता चलता है ये कितनी मुश्किल है करना. Yeah. सो आपको एक ख़ास किस्म की परसेवरेंस चाहिए, आपने कमिट होना उस चीज़ के साथ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोमेंट द डे वी डिड दैट, Mm-hmm. लाइक द MVP was working with, like, thank God now, like, ज़िंदगी में एक मकसद पूरा होगा. सो ये बहुत ज़रूरी है. So, sir, with that, I would like to ask you, okay, obviously you spent a lot of years in Pakistan. हम सब की एक अपनी connection है इस मुल्क के साथ. Uh, you see young generation every day as well as teacher. So, what are your tips? What are your thoughts for the young generation? What are your hopes for the Pakistan for this new era to come? Ah, right. So, I've lived in about 4 countries, different countries for different number of years. And coming back to Pakistan, I didn't have a second thought, because, in those countries, maybe this statement might not go so well with a lot of people. But whatever you do, you don't belong there. Uh, you could try to integrate as much as possible, but at the end of the day, you would be treated as the outsider. So for me it was very clear that this is the place I want to be, or the field I was in when I IC designing a PhD. Pakistan at that time there were no Yeah. apart from academia there were no other opportunities. However, जो मेरी पहली बात है ना, that trumps everything for me at least, और that has kept me motivated and passionate of living here and having a sense of belonging. But it's quite unfortunate that the last few years I've seen this huge um, trend in young generation to somehow just leave the country. Yeah. And that's very depressing for me, because probably it's our fault that we're not being creating opportunities for them to go, they stay back and enjoy the comfort of independence in Pakistan. So just मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, जब रिकमेंडेशन लेटर्स भी उनके लिए लिखता हूँ कि यहाँ एडमिशन हो गया है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मैं जा रहा हूँ, और आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, एंड आई हैप्पीली राइट द रिकमेंडेशन लेटर्स. बट मैं उनको एक जुमला ज़रूर कहता हूँ कि अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स में पाकिस्तान को ज़रूर रखना. Yeah. Because I feel that we have this responsibility towards our mother nation, or you look around and ask people who don't have this independence and are living in countries where उनको ये आज़ादी मूवमेंट की नहीं है, रिकग्निशन की नहीं है, एक बिलोंगिंग की नहीं है. सो मेरा मैसेज यूथ के लिए यही है कि ऑप्टिमिस्टिक रहें हमेशा, डोंट लूज होप एंड डोंट बी पैसिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक रहें और ट्राई टू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड. मैं कॉलेज स्कूल के साथ भी कुछ इंटरेक्ट अभी रिसेंटली मेरी हुई है, सो काइंड ऑफ आई फील कि दे आर लॉस्ट, करना क्या है और कहाँ हम जाएंगे, कैसे होगा. सो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आए, एंड ईच पर्सन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम और हर सेल्फ.
स्टूडेंट्स मेरे पास मशवरे के लिए भी आते हैं कि मैं अब ग्रेजुएशन होगी या मैं इंडस्ट्री में जाऊँ या मैं मास्टर्स करने जाऊँ, राइट? सो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 5 years और 10 years? एंड वो कहते हैं सर मैंने तो इतना लंबा सोचा ही नहीं। तो फिर अगला सवाल ये होता है कि सोचें, जस्ट डिस्कनेक्ट विद एवरीथिंग एंड सिट डाउन एंड डेलिबरेटली थिंक कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं Yeah, 5 साल में, 10 साल में, and that answer would help you in your current decision, because then the steps you take should be aligned to that larger goal you have for yourself. और makes फिर sense. चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाती हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द यंग जनरेशन कि बी होपफुल, बी positive and optimistic, and also try to have a long term मकसद Yeah, जिसके लिए वो स्ट्राइव करना चाहते हैं. A life without purpose is, I would say, not worth as compared to a life with a purpose and a yeah, goal in mind. And it could be a crazy goal, right? जरूरी नहीं है कि बस आपका गोल ये हो कि बस मैंने 1 लाख रुपए की जॉब करनी है. That's not a goal for me. yeah, The goals have to be larger, because a human being की ये I'd say ability है कि the more you push yourself, the more you could rise. तो आप आपका गोल ही छोटा है तो then you'll be capped. The goal should be much larger, and then पहुंच और उसके बाद पहुंचना जरूरी नहीं कि पहुंच जाए आप, but the other thing is then hard work. but वो hard work, persistent hard work, ठीक है? तो और वो 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, it's like persistent hard work you need to reach those goals. So this would be my concluding message for the young people. well, it's straight from your heart, sir. I can see that, and it means a lot. And I hope that as your student and other fellows, I can vouch for them as well. We are like all looking forward to contribute back into this country, in every way possible. I know that it's true that all of us, we all have like gut feeling to go abroad and to do something that is more impactful. But I think yes, it's true that we belong here, and we need to do something for this country as well. Thank you so much again, sir, for your time. I'll share the description and email. If you have any questions, you can let us know. You can comment in the comment section as well, and please let us know for the any future recommendations. Looking forward. Please don't forget to like, subscribe, and share. And that's it for today. Thank you so much. Thank you very much.